Assalamu alaikum, namaste, and we are back again after a break. Today we have an esteemed guest from United States of America, Dr. Tausif Kamal, who has been a lawyer in US, a corporate lawyer right now, one of the first Pakistanis in his field, and has been an author writing for Wall Street Journal, and has a wonderful book by him, which is Pakistan, A Possible Future. And today we are going to talk to him about his views on the current judgment that has come today on Imran Khan's PTI and the foreign funding case. Right. So, welcome to the show, Dr. Saab. And so what do you think? There has been a lot of hoopla over the last 8 years on this judgment. This has been constantly going on with all kind of stays in meanwhile, but finally it has come, and people are saying, the media is saying that it is a watershed moment in Pakistan's history and Pakistan's democracy. Right. How do you look at it? Thank you, Mahesh, for for this opportunity. Thank you very much. Greatly enjoyed your shows and your analysis on issues. Very sound, very objective. So, इसमें ये है कि this judgment was long awaited. Actually, this case started about 7 years back, foreign funding against PTI. Then it dragged on. The PTI continued continuation or postponement of the hearings for various reasons. So finally, they had to give a judgment, after 7 years. They scrutinized all the evidence, the Election Commission of Pakistan. Let me say, Election Commission of Pakistan is a constitutional body established by the Constitution, is an independent, autonomous body, not any court, any court of law. So it reports directly to the federal government, or it has full autonomy in election matters. Mm-hmm. So it operates under Election Commission Act, and also the political parties order, another legislation regulating political parties. Legislation. So this decision was basically, to make it briefly and to the point, they have ruled, they made a determination, Election Commission of Pakistan, with the chairman and two other commissioners, three-man body. So they've come to the conclusion, after scrutinizing all the evidence, the bank record, the state bank, and the declarations submitted by PTI as required under the Pakistani laws, annual accounting statements, all kind of things, cross-examination of witnesses and this and that, So finally they made a determination, the decision. Basically it's threefold. First of all, they're saying that yes, PTI did receive prohibited foreign funding. Foreign under the law is not allowed under Pakistan law. Any political parties cannot take funding from any foreign national or foreign agency or foreign corporation or foreign NGO or any foreign organization. Any foreign source is banned. So this was the crux. So they found out a whole list of foreign funding received by PTI. Right. From Arif Naqvi to an Australian, to American nationals, to Indian nationals, to American nationals, an agency, and the whole list is there. And substantial foreign funding. So there's no doubt about it being received. Then they ruled, the Election Commission of Pakistan, that yes, since they received the funding, the government can confiscate that foreign funding received, that portion which attributed to the foreign funding. That can be confiscated under the law, under Article 6(4), subsection 4 of the political parties order. That's one issue they decided. Second was they decided that Imran Khan, as party head of the political party, made false and inconsistent statements. Under Article 13 of this political parties order, every year a political party has to file a declaration with the Election Commission of Pakistan about its funds. All the accounts, all the money received, from where it received, the source of funding from whom it received, and the amount of funding. So there's no concealment
of any sources or the fund. Right. So there are many inconsistencies with PTI's statement, which was filed for actually for 5 years, and which Imran Khan had to sign as party head. Although they were audited, but he had to sign as party head. So they were saying he made false, inconsistent statements, or the second determination. Determination, they said that about the dissolution of the party, they made no conclusion, whether the party should be dissolved or not. That would be up to the federal government and the Supreme Court of Pakistan, they go along with it. Because to dissolve a party, you have to prove not only that it received foreign funding, but that the party, foreign funded political party, was working against the interests of Pakistan, against the national interests, against the sovereignty, against the territorial jurisdiction, or indulging in such acts as terrorism. So this they didn't dwell on it, on this aspect. So dissolution का उन्होंने कुछ नहीं कहा, dissolution. So these were the points, and now the matter is referred to the federal government for action. Now the federal government, if they accept this determination, this decision by the Election Commission, they will issue a notification in the Gazette of Pakistan. And then they will file a reference to within 15 days, they have to file a reference to the Supreme Court that they agree with the findings of the Election Commission. And yes, the party should be, the foreign funds should be seized, and whatever extra relief they want. If the party is dissolved, should be dissolved, then say that. If Imran Khan has to be disqualified, that's a separate issue, constitutionally. Under Pakistan law, there's a section of the Constitution, Article 62(1), which to the disqualification, number of disqualification for which a person seeking election can be disqualified from seeking election. So उसमें एक है when if make if the person is Sadiq or Amin. जी, Bishop, हाँ. And so in fact, in Nawaz Sharif's case, they had such case. It went to the Supreme Court. They said yes, he was, because he did not disclose, Imran Khan in his declaration to the Election Commission did not disclose his salaries, which he did not receive. He was entitled to the salary from a foreign company, UAE. So on that basis, they disqualified him, and they disqualified him for life disqualification. They cannot run for election for life. So his basis per Pakistan government, federal government, can ask the Supreme Court in its reference, that the PTI should be, that Imran Khan should be qualified, because not a Sadiq or Amin, because he gave false declaration to the Election Commission of Pakistan, for which there is evidence in black and white. जी, इसमें एक डॉक्टर साहब, इसमें एक इशू है जो आज सारा दिन हमने कमेंट्री सुनी है, उसमें वो एक मुद्दा ये उठा रहे हैं कि अगर इमरान खान को प्रोबेबली एक स्पेस मिलता है बेनिफिट ऑफ डाउट का, बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि भाई ऑडिटेड रिपोर्ट्स थी, तो ऑडिटर्स ने प्रिपेयर किया उनको, एंड अकाउंट्स के लोगों ने या जो उनकी जूनियर टीम थी इमरान खान के अंडर में, उन्होंने उसको प्रिपेयर किया, दे प्रेजेंटेड इट टू इमरान खान फॉर सिग्नेचर्स, एंड ही जस्ट signed them, just like that, as an officiating person. But उनको इसके बारे में कोई detailed information नहीं थी, and that is a kind of a space that PTI and its supporters are looking for right now, that he was not directly involved in it, but and nor was he aware about all this, लेकिन इतना है कि बस उन्हें मालूम नहीं था और उन्होंने साइन कर दिया, यही उनकी गलती है. तो ये वो आर्गुमेंट है. जी. No, you're right, Manish. You're right. This is the argument they will seek. If I was the lawyer, I also seek this argument, But I don't think on closer scrutiny this argument is valid. ये चलेगा नहीं. क्योंकि this is not a corporation. You have to distinguish. A political party is a political party registered under the Political Parties Act. Commission they have to do these certain things to a party. If they register, they agree to submit financial statement. The party head agrees that he is responsible. He is supposed to submit all these statements. Unlike a corporation, जहाँ वो already statements करते हैं. So already valid up to a certain extent is valid, but since he signed as a party head, he is responsible for it.
और बल्कि उन्होंने कहा भी है, टू कोट यू, द ईस्ट इलेक्शन कमीशन ने कहा भी है कि इमरान खान फेल्ड टू डिस्चार्ज, कोट अनकोट में बता रहा हूं उनका जजमेंट में, he failed to discharge his obligation as mandated under the Pakistan statutes, as mandated. तो statutory violation है. अब वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था, तो that's not a defense. Ignorance of law is no excuse, as we all know. I think it could be more of a political defense than legal. हाँ, political defense. लेकिन देखिए, नवाज शरीफ का प्रेसिडेंट बन गया. नवाज शरीफ ने भी कहा था मुझे नहीं पता था उसका कि इनका, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी उसमें यूएई में जो बड़ी कंपनी थी उन्होंने कर दिया कि यू आर एंटाइटल्ड टू दिस इनकम, तो उसको भी नहीं पता था, ही डिडंट नो अबाउट हिज इनकम. तो दैट वाज आल्सो, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज. the president, they should apply here. He is not an excuse. Ignorance of facts. You're signing as party head, responsible. जी, नवाज शरीफ के केस ने कम से कम एक नजीर तो बना दी है जिसको लेकर ये आगे बढ़ सकते हैं. और सादिक अमीन की जो फ्रेज यूज की थी जस्टिस सादिक निसार ने, एक लाहौर के यूट्यूबर हैं और जर्नलिस्ट हैं रिजवान राजी, वो सादिक निसार के बजाय वो उनको सादिक नासूर बोलते हैं. सादिक नासूर है वो. तो खैर, लेकिन वो मुझे लगता है नजीर तो है जिसको लेकर चल सकते हैं. लेकिन अगेन आप पाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है इन दिनों में, उसमें अभी 63 को लेकर भी आप ये देखिए कि एक केस में उन्होंने 63 को एक तरह से उसकी तस्दीक की, दूसरी तरफ से बिल्कुल दूसरी तरह से. तो डिपेंडिंग अपॉन कि किसका केस है और किसके फेवर में करना है, तो वो अपनी डेफिनेशन ही बदल रहे हैं. और उस पर भी आपने अगर नोटिस किया हो तो चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि भाई एक जज जो है वो गलती कर सकता है और अगले केस में उसको सुधार सकता है. जी, तो ऐसा है. ठीक है, वो ये कर सकता है, लेकिन इसमें मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें तो आपके आगे एविडेंस है, आपके आगे उसने वो साइन किए हुए डिक्लेरेशन, और उसमें वो देख लें, इनकंसिस्टेंसी देख लें, जो छुपाई अकाउंट डिक्लेयर ही नहीं किए उसने, पूरी एविडेंस है उसकी. और जनरली मैं देखा डॉक्टर साहब, इस तरह की जो लैंग्वेज होती है, जब आप इस तरह के सिग्नेचर्स करते हैं तो उसमें नीचे जो जहां सिग्नेचर किए जाते हैं वहां लिखा रहता है कि भाई आई हैव सीन इट एंड एंडोर्स व्हाट इज रिटन हियर इज ट्रू. राइट. और ये स्टेटमेंट अंडर ओथ, इसने अंडर ओथ एग्जैक्टली. हां, परजरी. तो इसलिए सो लीगली आई डोंट थिंक इट्स अ डिफेंस. यू आर राइट. इतनी वैलिड डिफेंस नहीं होगी. हम क्लोजर स्क्रूटनी करेंगे, पूरा फैक्ट देखेंगे, सब कुछ, तो ये नहीं होगी डिफेंस. अब ये है कि द क्वेश्चन विल बी कि हाउ लॉन्ग ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. ये है, या तो इसमें इनके जो है इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर, उसमें तो है कि 4 साल तक हो सकता है, फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन 4 साल तक डिस्क्वालिफिकेशन. नवाज शरीफ एग्जांपल, तो फिर तो वो लाइफ लॉन्ग का उसमें, लाइफ लॉन्ग उसमें. लेकिन आपको लगता है जो पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो डिस्पेंसेशन है राइट नाउ, आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ जो है वो इस किस्म का एक डिसीजन ले सकते हैं इतना स्ट्रांग कि वो इनके खिलाफ जाएं? आई मीन, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 2 दिनों में उनका एक पीडीएम का इजलास होना था जिसमें उनको इस तमाम मसलों पे फैसले लेने थे. लेकिन शहबाज शरीफ, मैं अगर लिबर्टी लूं और ये कहूं कि वो बहाना बनाकर भागे हुए हैं कि मैं फ्लड रिलीफ के प्रोग्राम देख रहा हूं और वो गायब है पीडीएम के इजलास से, तो वो मुझे लगता ये है कि जैसे वो थोड़ा सा इन मामलों में कमजोर नजर आते हैं मुझे इस तरह के फैसलों में. उनका वैसे वो वहां चले गए, यहाँ इतना इम्पोर्टेंट इश्यूज है, इट शुड बी इन इस्लामाबाद, वो वहां चले गए, लगे लैक्स लस्टर के दिस इज नॉट इंटरेस्टेड. लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड दिस मॉर्निंग, ख्वाजा रफीक ने पीएमएल का जो है स्टॉलवर्ट, वो बड़ा जोरदार तकरीर की है इमरान खान के खिलाफ आफ्टर द डिसीजन, उसमें पार्लियामेंट में एक्सेलेंट स्पीच. तो आई वाज लुकिंग एट द स्पीच टू गेट एनी हिंट्स कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, ये है कि नहीं सीरियस टू प्रोसीड अगेंस्ट खान एंड पीटीआई besides configuration फन डिसोल्यूशन में और डिस्क्वालिफिकेशन में हिंट देख रहा था, हिंट तो उसमें लगा कि वेरी स्ट्रांग. लेकिन
वो कहना proof is in the eating, proof of pudding is in the eating. हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज मैंने भी आज दिन में आई वाज लुकिंग एट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुसद्दिक मलिक साहब की, कायरा साहब की, तो इन सबको सुनते हुए जो है मुझे यही लगा कि दे वर ऑल वेरी स्ट्रांग, वंडरफुल स्पीचेस, और मुसद्दिक मलिक साहब तो बहुत अग्रेसिव थे अपनी स्पीच में। तो मतलब मुझे बस यही है, लाइक यू सेड, कि ये देखना ये है कि एग्जैक्टली क्या कुछ करते हैं, बजाय कि अब तक जो बोला गया है। ऑल्दो पॉलिटिकली इनके पास बहुत स्पेस नहीं है दाएं बाएं भागने का, इफ दे डोंट एक्ट दे विल बी थ्रोन आउट एनीवेज। तो हाँ, तो मुझे लगता तो है कि इफ यू अगर आपको दीवार के साथ लगा ही दिया है तो कम से कम फाइट बैक तो अच्छी तरह से करो, ये तो लगे कि हाँ कुछ मादा है। कोई हिंट नहीं दिया, अपनी धुआंधार तो करते हैं स्पीचेस, रेटोरिक है ना, ये करेंगे, तो करो तो बात है ना। जैसे कि उन्होंने एक्शन लिया ही नहीं उसके खिलाफ, जो शुरू में जब इमरान खान ये को हटाया था, आई थिंक ही कमिटेड दैट कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट टू वायलेट, टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। आर्टिकल 6 के अंदर कमीशन तो बिठाते हैं एटलीस्ट, वो भी नहीं किया। अदर केसेस आल्सो उन्होंने इनिशिएट किया ही नहीं एक्शन, प्रोसिक्यूशन ने उसने। और वो भी आप देखिए डॉक्टर साहब, ये हालत तब थी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि स्पीकर और इमरान खान ने कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया है। सुप्रीम कोर्ट कहता बिल्कुल अप टू द फेडरल गवर्नमेंट, द बॉल इनिशिएट, कमीशन बनाए, ये करें, इंक्वायरी करें, एफआईआर करें, देन रिफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मुझे ये लगता है, राइट, मुझे एक और चीज लगती है कि इसमें आई थिंक कि दे आर वेटिंग वेदर टू गो टू प्रोसिक्यूट, इसमें भी dissolution और उसमें disqualification. I think there might be some behind this scene negotiations with PTI. ये हो सकता है कि हम चलो नहीं करते हैं लेकिन तुम ये कब मानना, ऐसा कुछ होगा। I think पॉसिबल है, क्योंकि इमरान खान ऑन द स्लाई एक्ट करने में माहिर है, मतलब वो बिहाइंड द कर्टन जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं और अक्सर रिबेट लेना चाहते हैं पर्दे के पीछे से। तो वो आप हो सकता है कि ठीक कह रहे हो और वो किसी किस्म की रिलीफ इसमें अपने लिए लेना चाहें, बट वही है कि आने वाले दिन ये बता पाएंगे कि एग्जैक्टली किस करवट बैठता है। हाँ, पीटीआई ये कहती है कि ठीक है आप हमारे फॉरेन फंड्स कर लें, फ्रीज है ना, वो तो है ही, और एक्शन, बट वी वोंट मेक एनी सर्विस फॉर यू, इलेक्शन तक हम कुछ खास वो नहीं करेंगे। हाँ, मतलब मगनुआ फंडिंग तो देखिए, मगर मुझे क्या लगता है कि ये शायद नेक्स्ट शेड्यूल फॉर द इलेक्शन, ये कहे पीटीआई कि हम एक साथ इंतजार कर लेंगे, है ना। हाँ, लेकिन मुझे जहाँ डर लगता है, मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि कहीं पर ये भी एक उम्मीद बनती है कि जिस एनआरओ के पीछे इमरान खान इतने दिन से गालियां दे रहे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, कहीं वो खुद एनआरओ 9 से ले और बैठ जाए कि चलो यार मिलजुल के कुछ कर लेते हैं। I don't know. भी एनआरओ मांग रहे हैं, बिल्कुल ये। तो ये अजीब सी सिचुएशन है, गवर्नमेंट को पता नहीं कंसल्ट करेंगे जो पीडीएम वाले, मौलाना फजलुर रहमान को और पीस पार्टी को, कि ये फुल थ्रॉटल एक्शन करें कि रेफरेंस में सब चीजें मांगे। फॉरेन फंडिंग तो है ही, लेकिन डिसोल्यूशन मांगे, जो इम्पोर्टेंट है, तो पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी, और फिर ये भी मांगे इसका डिस्क्वालिफिकेशन भी मांगे, तो मिलके वो करेंगे डिसाइड। और नवाज शरीफ की पता नहीं क्या ओपिनियन है इसमें, दैट्स अनदर फैक्टर। हाँ, असली तो मुझे लगता है कि वही फैक्टर है असली, मगर मुझे ये भी नहीं मालूम कि अब वो उनका रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान में कितना खूबी से किया जा रहा है राइट नाउ, बिकॉज इमरान, मैंने जो नवाज शरीफ साहब का बिहेवियर देखा है, पॉलिटिकल बिहेवियर, वो यही होता है कि चाहे उनका ओपिनियन डिफरेंस हो, लेकिन वो जनरली अपनी पार्टी की मेजोरिटी देखकर और थोड़ा सा लीवे दे देते हैं कि चलो आप लोग कह रहे हो तो ऐसे कर लो। तो मुझे उसी का डर है। लेकिन जो भी एक्शन लेना है, they should do it quickly. Time is of the essence. कहते हैं time is of the essence. Time वक्त कम है, इनको मूव करना चाहिए फास्ट, केसेस बनाए 1-2 दिन में, और वो करे सबमिट 3-4 दिन में। ये पॉलिटिकल तो डिसीजन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो है, पर मुझे लगता ये है कि जो इलेक्शन कमीशन वाला जो केस है, इसमें मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी कुछ कर पाएंगे, बिकॉज इफ दे गो टू सुप्रीम कोर्ट इट विल ड्रैग ऑन। आप ये देखिए, जो सादिक अमीन वाली भी जो ट्रायल थी नवाज शरीफ साहब की, वो भी खासा वक्त चली थी, और आप देखिए
उस प्रोसेस में इलेक्शन का टाइम तो वैसे नजदीक आ जाएगा आपके अगर एक साल केस चलता है। नहीं तो व्हाट दे विल डू के उसको बाइफरकेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। एक रेफरेंस में ये फॉरेन फंडिंग का हो जाएगा, दिल विल बी फास्ट ऑन अ फास्ट ट्रैक। उसमें तो फॉरेन फंडिंग है, रिसीव की है, वो है ओपन एंड शट केस जिसे कहते हैं, बिल्कुल। या अमेरिकन कहते हैं स्लैम डंक केस। बेस्ट। हाँ, तो आप ये देखिए तोशा वाला खाना वाला जो केस है वो भी अपने आप में है तो ओपन एंड शट ही। हाँ वो भी है, हाँ उसमें भी, हाँ बिल्कुल एविडेंस है उसकी। तो इसमें वो एक रेफरेंस फाइल करते हो सकता है कि एक फाइल करने पढ़ने के लिए, दूसरा रेफरेंस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, और तीसरा उसके लिए डिसोल्यूशन के लिए, कि ये पार्टी शुड डिसॉल्व द फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो कहेंगे स्पीचेस की थी और ये किया था अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, ग्राउंड पे वो कर सकते हैं अपनी स्पीचेस से, अपने बिहेवियर से। और उन्होंने जो ऑर्केस्ट्रेट किया सोशल मीडिया कैंपेन अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, अगेंस्ट द आर्मी चीफ जो किया है, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी है इन्होंने। बिल्कुल। और जो उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को, इससे अच्छा है कि वो एटम बम ही गिरा दे पाकिस्तान के ऊपर, उनको पार्टी में आने, या कहा कि पाकिस्तान विल डिसइंटीग्रेट, 3 हिस्सों में अलग हो जाएगा, 3 पाकिस्तान से नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटेग्रिटी के खिलाफ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसमें नेक्सस, दे हैव टू प्रूव द नेक्सस। फॉरेन फंडिंग का इससे नेक्सस क्या है, इसका कनेक्शन, दैट माइट बी टफ टू प्रूव। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो I think we did manage to cover the ground on the subject for now, and let's keep talking on this in future and see which way it goes. Yeah. Thank you so much for being there today. Thank you, Ramesh. Have a great day, and thank you for this opportunity. Inshallah.